Hello and welcome to H.Biology. So today we are going to discuss the last part, that is viruses, viroids, prions and lichens from the chapter Biological Classification. We'll be solving last 10 years Neet questions. If you have not watched the previous topics, kindly go through it. So without wasting any time, let's get started. The first question says, mad cow disease in cattle and C.R. Jacob disease in humans are due to infection by। तो सबसे पहले हम मैड काउ डिजीज के बारे में बात करते हैं। मैड काउ डिजीज को BSE भी कहा जाता है, विच मीन्स बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेलोपैथी। तो इसे BSE भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। अब बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी में क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो कि कैटल के ब्रेन को अफेक्ट करेंगे और इसका मेन रीज़न है प्रायंस। प्रायंस जैसा कि हम जानते हैं, प्रायंस आर अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। इसे हम प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। Now, if we talk about the next disease, that is C.R. Jacob disease, it is also known as Creutzfeldt-Jakob disease, and this disease mainly affect humans. ये भी एक तरह का न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज है जो कि अफेक्ट करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और इसके बहुत सारे सिम्टम्स अल्जाइमर और डिमेंशिया से मैच करते हैं, जैसे मेमोरी चली जाएगी, ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ दीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय प्रायंस विच आर abnormally folded proteins. Now if we look at the options, the fourth option says prion, which is the correct one. The next question says, which of the following is correct about viroids? तो viroids के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। viroids are smallest infectious pathogens, और अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है फ्री RNA. Why the RNA is free? Because they do not have a protein coat. They do not have a capsid unlike viruses. Now, if you look at the options, the first option says they have RNA with protein coat. So they do not have any protein coat. So this is incorrect. Next one is they have free RNA without protein coat. Yes, this is correct. Next one is they have DNA with protein coat. They don't have protein coat. They don't have DNA. This is incorrect. Next one is they have free DNA without protein coat. No, they do not have free DNA. So this is incorrect. So the correct option here is option B. The next question says, mad cow disease in cattle is caused by an organism which has। तो हमने already discuss कर रखा है mad cow disease के बारे में, जो कि prion से cause होता है। It is a neurological disease in case of cattle, and prions are what? Prions are the abnormally folded protein. Now, if we look at the options, the second option says abnormally folded protein. So this is the correct one. The next question says, which of the following statements is incorrect? तो पहला statement है prions consist of abnormally folded proteins. तो हमने already discuss कर रखा है कि these are abnormally folded protein. So this is the correct one. Next one is viroids lack a protein. तो viroids में क्या होते हैं? Viroids consist of free RNA without any protein coat. So this is also correct. Next one is viruses are obligate parasite. Obligate का मतलब होता है strict. Of course they are strict parasite. They require a host in order to reproduce. So this is also correct. The last one is infective constituent in viruses is the protein coat. अब अगर वायरस का स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा which can either be RNA और DNA, और बाहर प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन कोट। Now, the infectious constituent of virus is either RNA or DNA, not the protein coat. So this is the incorrect one which we have to find. So the correct option here is option D. The next question says, which of the following statements is correct? अब यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये लाइकेन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो हम लाइकेंस के बारे में समझ लेते हैं।
लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसमें एक एल्गल पार्टनर होगा और एक फंगल पार्टनर होगा। एल्गल पार्टनर को कहा जाता है फाइकोबायोन्ट और फंगल पार्टनर को कहा जाता है माइकोबायोन्ट। अब इसमें एल्गी का काम होगा फोटोसिंथेसिस करना, और फोटोसिंथेसिस के लिए इसको जो वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा? फंजाई प्रोवाइड करेगा। अब लाइकेन के बारे में एक और चीज फेमस है कि लाइकेंस कैन नॉट टॉलरेट पॉल्यूशन, दे कैन नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, और इसीलिए कहा जाता है कि लाइकेंस आर वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन, क्योंकि जहाँ पॉल्यूशन होगा वहाँ इनके पॉपुलेशन में कमी पाई जाएगी। Especially they are indicators of SO2 pollution, sulfur dioxide pollution. Now, if we look at the statement, first statement says lichens do not grow in polluted areas, which is correct. The next one is algal component of lichens is called mycobiont. No, it is called phycobiont. It is incorrect. Next one is fungal component of lichens is called phycobiont. No, it is mycobiont. So it is incorrect. Fourth one is lichens are not good pollution indicators. No, they are good pollution indicators. So the correct option here is option 1. This question says viroids differ from viruses in having. तो विरॉइड्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। विरॉइड्स आर द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पैथोजेंस एंड दे हैव फ्री आरएनए विदाउट एनी प्रोटीन कोट। अब अगर वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, एंड प्रोटीन कोट is present, which is called the capsid. Now, if we look at the options, the first option says DNA molecules without protein coat. तो viroids में कभी भी DNA molecule नहीं होगा. So this is incorrect. Next one is RNA molecules with protein coat. RNA तो होता है पर protein coat नहीं होगा, तो this is incorrect. Next option is RNA molecules without protein coat. Of course, this is correct. The last one is DNA molecules with protein coat. तो DNA molecule again नहीं होगा और protein coat भी नहीं होता, so this is incorrect. So the correct option, they differ from viruses in having RNA molecules without protein coat. That is option C. The next question says, which of the following statements is wrong for viroids? Now we have already discussed about viroids that they have free RNA, and they do not have capsid, that is protein coat, and their RNA is of low molecular weight. Now, if we look at the options, the first option says they cause infections. So, of course, these are the smallest infectious pathogen, they will cause infection. Next one is their RNA is of high molecular weight. No, they are of low molecular weight. So, this is incorrect. Third one is they lack a protein coat. Of course, they lack a protein coat. So this is correct. The last option says they are smaller than viruses. Of course, ये viruses से smaller होंगे, छोटे होंगे. So we had to find the wrong one for viroids, which is option B. The next question says, select the wrong statement. The first statement is the term contagium vivum fluidum was coined by M.W. Beijering. So of course Beijering जब वो viruses को study कर रहे थे तो at that time he coined this term contagium vivum fluidum, which means infectious or contagious living fluid. So this is correct statement. The next one is mosaic disease in tobacco and AIDS in human being are caused by viruses. So of course mosaic disease TMV virus करेगा और AIDS के लिए responsible है HIV virus. So this is also correct. The next one is the viroids were discovered by DJ Ivanovsky. So this is incorrect क्योंकि viroids को discover किया था T.O. डाइनर ने, Ivanovsky ने viruses को discover किया था. The last one is W.M. Stanley showed that viruses could be crystallized. So of course he showed that this is correct one. So we had to find the wrong statement, which is option C. The next question says, which of the following shows coiled RNA strand and capsomeres?
Now, if we look at the options are poliovirus, tobacco mosaic virus, measles virus and retrovirus. तो यहाँ पे दिए गए सारे ऑप्शंस में से टोबैको मोज़ैक वायरस के पास क्वाइल्ड आरएनए स्ट्रैंड होगा, बाकी किसी के पास भी क्वाइल्ड आरएनए स्ट्रैंड नहीं होता है. इन केस ऑफ टोबैको मोज़ैक वायरस, द क्वाइल्ड आरएनए स्ट्रैंड, the coiled RNA is present inside, and outside there is the protein coat. और प्रोटीन कोट में जो कैप्सोमेयर्स प्रेजेंट होंगे वो कुछ इस तरह से असेंबल करेंगे कि पूरे के पूरे टीएमवी को एक रॉड लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर मिलता है, और उस रॉड लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर के बीच में अंदर में प्रेजेंट होंगे RNA, which is coiled RNA, not seen in other viruses given in the options. So the correct option here is option B. The last question says viruses have. तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है DNA enclosed in a protein coat. So this can be the answer, क्योंकि of course उनके पास DNA होता है जो कि प्रोटीन कोट के अंदर होता है. उनके पास RNA भी हो सकता है, इसलिए we are saying this can be the answer. नेक्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस. तो वायरसेस ना तो प्रोकैरियोट है ना यूकैरियोट है, तो ये प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज सिंगल क्रोमोसोम. अब वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल है उसे हम या तो डीएनए कहते हैं या फिर उनके पास आरएनए होगा. अब डीएनए और आरएनए या तो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं या डबल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं, पॉजिटिव सेंस हो सकते हैं, नेगेटिव सेंस के हो सकते हैं, बट वी डोंट यूज द टर्म क्रोमोसोम फॉर देम, सो दिस इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज बोथ डीएनए एंड आरएनए. सो दे नेवर हैव बोथ डीएनए और आरएनए एंड आरएनए. इनके पास या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. So the most probable answer here is option A. So with this, we have successfully completed all the previous year's questions from the topic viruses, viroids, prions, and lichens. If you have not watched the previous topics from this chapter, biological classification, kindly go through it. And if you have any query in your mind, you can comment in the comment box. Kindly like, subscribe, and share with your friends, and stay tuned for the upcoming lecture videos. Thank you so much.